उरियाम घाट में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पूरे देश के साथ साथ आज उरियाम घाट में भी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उरियाम घाट थाना के सौजन्य से तथा स्थानीय ग्राम रक्षा दल के सहयोग से एकता दौड़ शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उरियाम घाट क्षेत्र के विभिन्न दलों, संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था देश में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना। सरू पथार से रिपोर्ट, जेम्स उरांग। राष्ट्रीय एकता दिवस हिसापे पालन करा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी समग्र देशके एक भातृत्वबोध सम्पर्के बांधि राखिছিল। तेखेतर जी 150तम बार्षिकी সেই उपलक्षे এই বছর राष्ट्रीय एकता दिवसটো আমি কিছুমান কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। যোৱাকালি আমি 30 অক্টোবৰ তাৰিখে স্থানীয় দুখন স্কুলত আমি ড্ৰাগছ আৰু সাইবাৰ ক্ৰাইম তথা ৰোড সেফটি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম পতা হ'ল। আৰু আজি উৰিয়াম ঘাট থানাৰ সৌজন্যত তথা স্থানীয় ভিডিপি গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু আমাৰ স্থানীয় যি সতীৰ্থ যুৱকসকল সকলোৰে সহযোগত আমি এক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰান ফৰ ইউনিটি একতা দৌৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰু সেই ইয়াত স্থানীয় সকলো লোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ যি উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সৰগত কৰি আমি সকলো আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতেও ভাৰতবৰ্ষৰ যি একতা, অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য, সেই সম্পৰ্ক বান্ধ খাই থাকিব লাগিব। আমি আজি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসত আমি সংকল্প লওঁ যে কোনো ধৰণৰ অসূয়া অপ্ৰীতি নোহোৱাকৈ আমি সকলোৱে এক ভাতৃত্ববোধ সম্পৰ্কে বান্ধ খাই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।